Hello, good morning to one and all. Today we have to start with the last unit of the physical chemistry, that is a surface chemistry and a colloidal state. Though two different lessons are there, one is a surface chemistry and another one is a colloidal state. Colloidal chemistry, it is also called as a colloidal chemistry. First of all, we will start with that surface chemistry. It is a very much important concept or say branch of the chemistry that deals with the surface phenomena. See, now in a day-to-day life, we are very much interested to have such a surface phenomena concepts. There is a huge that particular applications of this branch is there in day-to-day life. क्यों होता है इसका यूज और क्या होता है that we will see. See, for ये अभी surface chemistry not only useful in case of the controlling of the pollution, but also it is used in case of the drug delivery and drug transportation also. And in the surface chemistry, surface active agents are used, having nowadays used for the different kinds of the particular treatments also. Okay, ये आगे की एप्लीकेशन है. अभी हमारे सिलेबस में इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब क्या कि सरफेस फिनोमेना होते क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या आता है, क्या उसमें बेसिकली व्हाट इज द दैट. सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कि सरफेस केमिस्ट्री है तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एब्सॉर्प्शन फिनोमेना. एब्सॉर्प्शन अलग और एब्सॉर्प्शन अलग. सरफेस केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, एडसॉर्ब होने वाला है, मतलब सरफेस के ऊपर रिटेन होने वाला है. और एब्सॉर्प्शन मतलब क्या, दैट पर्टिकुलर थिंग्स गेटिंग इनसाइड द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऐसे में. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ adsorbent, the substance on the surface of which adsorption occur is known as the adsorbent. जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे कि चारकोल है, आपके एक सिलेबस में चारकोल का भी एग्जांपल है. ऐसा है कि सरफेस के ऊपर रिटेन रहना चाहिए, सरफेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मटेरियल से हम क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको अमोनिया एंड चारकोल का. ओके, एक्टिवेटेड चारकोल. ओके, in the adsorption of ammonia on activated charcoal. Okay, ओके. अभी देखो चारकोल लिया है और उसमें से अमोनिया, आपको एक्सपेरिमेंट है फिजिकल में कि जहाँ पे हम ग्लाइसिल एसिटिक एसिड का स्टडी करने वाले हैं. और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड को हम क्या करने वाले हैं, सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होता है. तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम निकालेंगे कि बाबा ये पाउडर क्वांटिटी जो एडसॉर्बेंट की चारकोल की पाउडर जो हम फिक्स रखने वाले 1 ग्राम, और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का एसिटिक एसिड लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है या नहीं होता है. कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ इसका मतलब कि एसिटिक एसिड उस सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हुआ. अगर वो एडसॉर्ब होता है तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है कि एडसॉर्प्शन हुआ, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं. राइट, नाउ यू कैन सी दैट. अभी ये आपको पता चला एडसॉर्बेंट. अदर एग्जांपल्स ऑफ द एडसॉर्बेंट इंक्लूड्स द सिलिका जेल, एल्यूमिना. आप टीएलसी करते हैं ऐसे में, तो क्या करता है, जो आपका टीएलसी में हम सिलिका जेल यूज करते हैं वो भी एडसॉर्बेंट है. वो क्या करता है, सॉलिड को रिटेन करता है, सरफेस पे रखता है और उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. राइट, एल्यूमिना भी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम, निकेल है, एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसके ऊपर चीज रिटेन होती है, अंदर नहीं चली जाती, उसे हम क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट. एडसॉर्प्शन, it is a surface phenomena in which the substance collects or concentrate on the surface of another substance. Adsorption may be defined as the existence of higher concentration of the substance on the surface of the another substance than it is present in the bulk of the substance. Simple definition, surface के ऊपर डिपॉजिट होना या concentrate होना, उसे हम क्या कहते हैं, adsorption. Adsorbate,
We adsorbate, very important. The substance which gets adsorbed on the surface of another substance is called as adsorbate. मतलब चारकोल पाउडर, अगर चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल अगर adsorbent है तो अमोनिया क्या हुआ? Adsorbate. Okay. Then the desorption, the process of removal of the adsorbed substance is called as desorption. उसको निकालना है, हटाना है, उसे हम डिसॉर्प्शन के. Desorption, the process which makes it difficult to distinguish between the adsorption and the absorption is known as the sorption. मतलब हम adsorption और absorption में जब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो उसे कॉमनली क्या कहा जाता है? Sorption. Okay. Then absorption, it is a phenomenon in which a substance is not only retained on the surface but passes through the surface and get distributed throughout the solid or liquid body. उसे हम क्या कहते हैं? Absorption. ये definition जो है, it is a very much useful as far as your that particular MCQ is concerned. Okay, heat of absorption, the amount of the heat evolved per mole of the adsorbate adsorbed is called heat of absorption. ये ध्यान में रखना है. इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, एमसीक्यूज के लिए आती है. ओके, नेक्स्ट इज द see adsorption isotherm of ammonia on charcoal. We have to see in detail. आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में प्रेशर है, ओके, एंड अमोनिया एडसॉर्ब, उसका कॉन्सेंट्रेशन है एट डिफरेंट टेम्परेचर. इन फिगर यू कैन सी द V adsorption, volume of the gas adsorbed per unit mass of the adsorbent at a pressure P. P0 is the saturated vapor pressure at the experimental temperature, and that is the pressure required to condense the gas to the liquid. Any solid is capable of absorbing a certain amount of gas. The extent of adsorption at equilibrium depending on the temperature, pressure of the gas and the effective surface area of the solid. Adsorption of a gas increases with the increase in pressure and decrease in temperature. इसे अंडरलाइन करना है, इसे ध्यान में रखना है. Adsorption of a gas increases with increase in pressure and decreases in temperature. Increases with increase in pressure and that particular decrease in temperature, that you have to remember. Okay. Then in the above figure, the quantities of ammonia adsorbed by the charcoal at various pressure and temperature are shown. It is observed that the adsorption of ammonia is maximum at low temperature and at high pressure. देखो ये लो टेम्परेचर रहेगा, अब इसमें लो टेम्परेचर के 263 और हाई प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू हाई, यहाँ पे एडसॉर्प्शन ज्यादा है. ओके, दैट इज ओनली द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. बाकी इसमें not that much things are there. It is observed that the adsorption of ammonia is maximum at low temperature. ये भी ध्यान में रखना है. According to Lee principle, the decrease in the temperature favors exothermic process. Okay, since the adsorption is favored by decrease in temperature, it must be exothermic process. आपको MCQ के लिए ये भी आएगा. Then we will see the types of the adsorption. There are the two types of the adsorption. One is the physical adsorption, उसे physisorption भी कहते हैं या van der Waals adsorption भी कहा जाता है. Second वाला है chemical adsorption और chemisorption, और you can call as a activated adsorption also. Okay, ये अलग अलग नाम है, MCQs के लिए भी यूजफुल रहते हैं. Okay, I am trying always to give the different things. Okay, अभी यहाँ पे यू कैन सी द फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन देखना है, इसका कंपैरिजन है. इट इन्वॉल्व्स द इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस. इट इन्वॉल्व्स द केमिकल फोर्सेस, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एडसॉर्बेट एंड द एडसॉर्बेंट. हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज जनरली लेस देन 40 किलो जूल
पर मोल, यहाँ पे क्या है between 40 to 400 kilojoule. It is reversible, it is not reversible, it is not specific, it is open specific. Activation energy is low, high activation energy is involved. It is a fast process, it is usually slow process. It is appreciable at low temperature and high pressure, or it is favored at high temperature. Decrease of pressure does not cause desorption. Multi-layers of the adsorbate molecules are formed under high pressure. Here, only monolayer of adsorbate molecules is formed on the surface. It is general phenomenon which occurs in gas-solid system under suitable condition of temperature and pressure. It can occur only if the gas is capable of forming the chemical bond with the surface. Structural units. Okay. And then define adsorption isotherm and explain their types. The relation between the amount of the substance adsorbed बाजार से चाय लाने के लिए शायद भाई ओके Okay, the relation between the amount of the substance adsorbed by an adsorbent and the equilibrium pressure or concentration at a constant temperature is called as the adsorption isotherm. MCQ के लिए important है, हाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है. It is again the useful for the this particular. अब यहाँ पे ब्रॉनर नाम के साइंटिस्ट ने इस एडसॉर्प्शन आइसोटर्म्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है. उसने टाइप 1 आइसोथर्म, टाइप 2 आइसोथर्म, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ऐसे अलग अलग 5 तरह के दिया है. अभी उसने अलग अलग एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है. अमोनिया ऑन चारकोल एट 273 केल्विन, ऑक्सीजन ऑन चारकोल एट 90 केल्विन. यहाँ पे उसने दिया है ग्राफ. इट शोज रैपिड rise in the amount लैब से लाने के दूध की. हाँ तिथं दुसरा शिपाई नाही त्यांचं कोण शाळेत. Hello. Okay. This is a type 1 isotherm. Ammonia on the charcoal at 273 Kelvin and oxygen on the charcoal at 90 Kelvin. It showed a rapid rise in amount of the adsorption with increase in pressure up to a limiting value. उसे हम VM कहते हैं. Okay. That is volume of the gas required to cover unit mass of the adsorbent with a complete monolayer. This is a Langmuir type isotherm which obtained when adsorption is restricted to a monolayer. Generally, chemisorption isotherm shows this shape. ये जो shape है, you can see कि पहले इंक्रीज हुआ, बाद में स्टॉप हो गया लिमिटिंग वैल्यू के बाद में जाने के बाद में. ये टाइप 1 आइसोटर्म है. ये इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द मोनोलेयर. ओके, एक ही लेयर फॉर्म होता है. अभी एडसॉर्प्शन में मैक्सिमम लेयर भी फॉर्म हो सकते हैं. टाइप 2 आइसोटर्म एडसॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन सिलिका जेल एट 78 केल्विन. इट रिप्रेजेंट्स मल्टी लेयर्ड फिजिकल एडसॉर्प्शन. अभी देखो जहां पे लिमिटिंग वैल्यू आती है वो मल्टी लेयर्ड रहता है. अभी ये ग्राफ आपको दिखाऊंगा तो कंटिन्यू होते जा रहा है. बराबर है.
ट्रांजिशन पॉइंट के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है. It is a multi-layer physical adsorption on non-porous material. This type of the isotherm has a transition point at X, which represents the pressure at which the formation of the monolayer is completed, and that of the multi-molecular layer begins. The multi-layers are usually formed at higher pressure. The van der Waals forces of the first layer are responsible to hold the molecules of the second layer and so on. तो इसमें van der Waals forces important है. Isotherm 3, adsorption of the bromine on the silica gel at the 352 Kelvin. In this type of the isotherm, there is no transition point. This indicates that the multimolecular layer formation starts even before the monomolecular formation is complete. This is possible only when the forces of the adsorption in the monolayer is relatively less. Type 4 isotherm, adsorption of benzene on the ferric oxide gel at 320 Kelvin. In this case, there is a tendency for the saturation state to be reached in a multimolecular layer as well. It occurs at high pressure. Okay. और 5 नंबर का है that water vapors, adsorption of water vapor on charcoal at 373 Kelvin. This isotherm indicates the formation of the multimolecular layer at a relatively low pressure and at high. And at higher pressure, saturation point is reached. This is all about the different types of the adsorption isotherm. We will stop here. Remaining part we will see in the next lecture.